Strategic planning is an important concept in educational planning. Let's see what strategic planning is about and how is it different from traditional educational planning. Strategic planning is a management tool to help an organization improve its performance by ensuring that the members of the organization are working towards the same goals, and by continuously adjusting the direction of the organization to the changing environment on the basis of results obtained. There is too much on this slide, in fact, but you see that it is a strategic planning is a management tool to achieve the desired outcomes. The important aspect of strategic planning is to ensure that everybody in the organization is working towards achievement of same goals. So there are shared goals, and every actor involved in the organization takes the responsibility to achieve those goals. Important aspect of strategic planning is that it is flexible. It is not linear. It is not fixed like traditional planning, जहाँ पर एक plan बन जाता है और उसको step by step implement होना होता है. It is not the case in strategic planning. Strategic planning is flexible enough, and it keeps changing according to the changing environment. Strategic planning is not just a technical undertaking that spells out future objectives to be reached and actions to be taken. It requires a global sense of purpose and direction capable of guiding implementers in making everyday choices about what actions should be taken in order to produce the expected results. जब हम ये बात करते हैं, it requires a global sense of purpose. ग्लोबल सेंस ऑफ पर्पस का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के अंदर के क्या पर्पस है. अगर आपकी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें भी जो आपका शेयर्ड पर्पस होगा, दैट मे बी टर्म्ड एज ग्लोबल सेंस ऑफ पर्पस. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज पार्टिसिपेटरी इन नेचर. इट गाइड्स एजुकेशनल डेवलपमेंट बाय गिविंग अ कॉमन विजन and shared priorities. Educational planning is both visionary and pragmatic. Pragmatic means practical, engaging a wide range of actors in defining education's future and mobilizing resources to reach its goal. जब हम कहते हैं engaging a wide range of actors, मतलब ये कि उसमें सिविल सोसाइटी भी आ सकती है. अगर हम छोटे लेवल के ऊपर बात करें तो एक स्कूल के अंदर भी स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए जाते हैं. देयर आर सम इंस्टीट्यूट्स विच आर मेकिंग स्ट्रेटेजिक प्लान्स रेगुलरली. उसमें क्या है कि जब इन्वॉल्वमेंट आती है तो वो सिर्फ ये नहीं है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है या डायरेक्टर्स हैं वो बैठ के प्लान बना रहे होंगे. नो, उसके अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी इन्वॉल्व होंगे, टीचर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, एंड सिमिलरली parents and other civil society may be involved in making a strategic plan of a school. Similarly, अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे. सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज पार्टिसिपेटरी इन इट्स अप्रोच. Strategic planning is different from traditional planning because it is result oriented. It is not plan oriented. Traditional planning is more plan oriented. कितना अच्छा plan बना है. Strategic planning is on the other hand result oriented. It is participatory, जबकि traditional planning is hierarchical. Iterative planning कि आप उसको, इट इज़ नॉट लीनियर कि एक दफ़ा बनी है तो वो ही चलता चला जाएगा. नो, आप उसको चेंज करते रहते हैं. मीन्स इट इज़ फ्लेक्सिबल. चेंज ओरिएंटेड, पर्पज़ ये है कि जहाँ पे आप इस वक्त खड़े हैं इससे आगे जाना है. ये नहीं है कि जहाँ पे आप हैं आपने उसी पोजीशन को मेंटेन करना है. इट शुड नॉट बी द केस. जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से मुराद जो कि फ्यूचरिस्टिक हैं, उनको ग्रो करना चाहिए. टाइम के साथ साथ तब्दीली आनी चाहिए. इफ़ you are running a school and that is running very smoothly, तो आपको लगता है कि it should maintain its status. लेकिन जो visionary planning होगी उसमें ये होगा कि ये अपना status जो इस वक्त का है इसको तो maintain करे, लेकिन इसके साथ साथ ये जहाँ आज है इससे आगे जाए. इसका फ्यूचर जो है इससे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए.
اسی طریقے سے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈپارٹمنٹ سے ایک انسٹیٹیوٹ سٹارٹ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بہت سارے اور ڈپارٹمنٹس ایڈ کیے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اور سٹاف ہائر کیا جاتا ہے. سو ڈپارٹمنٹس اینڈ انسٹیٹیوٹس دے گرو. سو اٹ مسٹ بی چینج اورینٹیڈ. آپ نے اس اسٹیٹس کو جو اس وقت میں ہے اسی کو مینٹین نہیں کرنا. دیر از پرفارمنس مانیٹرنگ. یہ نہیں دیکھا جاتا اسٹریٹجک پلاننگ کے اندر کہ آپ کی پریزنس کتنی ہے. آپ کی پریزنس بالکل ڈسٹینس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. یو مے ورک وائل ورکنگ ایٹ اے ڈسٹینس. جس طرح سے کچھ اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ امپلائیز کی پریزنس ہوتی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں. کچھ اور ادارے ہیں جہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ امپلائی پریزنٹ ہے یا نہیں میکس نو ڈفرینس. وہ دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس کیا ہے، جو کام دیا گیا تھا کیا وہ کام ہوا ہے یا نہیں. سو اسٹریٹجک پلاننگ میں پرفارمنس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، ان کی امپلائیز کی اٹینڈنس کی اس طرح سے مانیٹرنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ایمفیسس آن پلان امپلیمنٹیشن. پلاننگ سے زیادہ فوکس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ پلان امپلیمنٹیشن کیسے کی جا رہی ہے. سو اسٹریٹجک پلاننگ کے اندر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وچ آر ڈفرینٹ فرام ٹریڈیشنل پلاننگ. سو اسٹریٹجک پلاننگ از اے مینجمنٹ ٹول which really helps in achieving excellence in any organization.